Good evening, all. Wish you very happy Holi. And on this holy occasion, yes, we will study biochemistry. I usually say, and in fact, I don't say. This is told from my parents also and my teachers also. Ki whenever you are utilizing your time in your work, whatever you are doing, just like we are studying, so even on a particular occasion, if we enjoy that occasion and also invest some time in study, that is always fruitful. We get some extra blessings from God. क्यों मिलता है ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दिस इज द फैक्ट. यदि तुम अपना होली पे, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि yes, in the last session also I mentioned this part कि health का ध्यान रखना है, play होली, enjoy होली, but keep in mind कि ज़्यादा पानी में नहीं भीगना. The weather is changing. उसमें होता क्या है कि यदि बीमार हो गए, yes, कोई इन्फेक्शन हो गया तो it will waste our 1 or 2 days. So keep in mind, enjoy होली with the colors only. ओके, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्ट करना, कोशिश करना, अपना हेल्थ का ध्यान रखना. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि विच इज द मेन मेटाबॉलिक फ्यूल. लीवर in fed state utilize glucose, fasting state it utilize fatty acid, and starvation it utilize amino acid. Okay, so how you will remember? If you remember that I told you that whatever diet we take, main component is carbohydrate, फिर lipid, then protein. So main dietary constituent is कार्बोहाइड्रेट. तो हम ऐसे याद रख लेते हैं कि लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म. लीवर क्या है? लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म. इट विल यूटिलाइज इन द सेम सीक्वेंस. फैट स्टेट में इट विल यूटिलाइज ग्लूकोज, फास्टिंग में फैट, स्टारवेशन में अमाइनो एसिड. सो यू विल रिमेंबर लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म सीक्वेंस. यस, नाउ brain is very vital organ. It utilize only and only glucose, some ketone bodies also. Brain, yes, we are using brain and we are using glucose. Hypoglycemia, you must have heard. In hypoglycemia there are seizures. Why I am telling you like this? This is a correlation. Questions are asked, hypoglycemia usually manifest with seizures. You means brain is very much affected in the deficiency of glucose. Why it is so affected? Because brain utilize glucose, but in starvation it can also utilize ketone bodies. Okay, these are conceptual mnemonic. RBC utilize only and only glucose. Question is asked, RBC is utilizing only and only glucose. This is blood. In blood glucose is there. RBC is in blood, glucose is in blood. So it's a mnemonic कि जब when RBC is surrounded by glucose, there is no need to depend on any other compound. Whenever it will require, it will take glucose and will eat it up. So RBC को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या यूटिलाइज करती है? That's why it utilize only and only glucose. That's why what nature did? Nature said there is no need to keep mitochondria. Means no mitochondria in RBC, the space is filled with hemoglobin, because the main function of RBC is to transport oxygen.
Clear? So now we remember RBC is present in blood, okay, and glucose is present in blood. So RBC is dependent totally on glucose. One question is asked, why it is dependent only on glucose? Because it has no mitochondria. Okay. Heart utilize fatty acid even in fed state. Question is asked. Heart utilize fatty acid even in fed state. Mnemonic, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है. हम कहते हैं दिल तो पागल है, क्यों पागल है? यस, कि तुम्हारे पास ग्लूकोज है लेकिन तुम क्या यूटिलाइज कर रहे हो? फ्री फैटी एसिड. यस, दिल तो पागल है मीन्स हार्ट यूटिलाइज फैटी एसिड इवन इन फैड स्टेट. You all know that ketone bodies are very toxic. Diabetic ketoacidosis, starvation ketoacidosis can lead to death also. Then why liver is synthesizing ketone body? Why liver is synthesizing ketone body? Now you will remember most vital structure, brain and heart utilize ketone body in starvation. Most vital structure, brain and heart utilize ketone body for starvation. In starvation, that's why liver synthesize ketone bodies. Okay. Now ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर अभी बताया मैंने. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 is present in brain and RBC because brain and RBC utilize mainly glucose. Glucose transporter 2, liver and kidney and pancreas. 3, how to remember? Thank you all, happy Holi to all of you. Yes, liver, kidney and pancreas. Question is asked, glucose transporter 2, two-way communication. Suppose this is suppose this is cell membrane and this is glucose transporter. Glucose can enter and can come out via glucose transporter to two-way communication. Two-way communication, where we require two-way communication, wherever gluconeogenesis occur, where everything is conceptual, wherever gluconeogenesis occur in liver and kidney. Wherever gluconeogenesis occur, yes, we require two-way communication, means glucose should come out of the cell. Liver, kidney. Pancreas also two-way communication. Why pancreas? Because yes, I have discussed it in last chanting. Yes, that pancreas, yes, pancreas release insulin according to glucose concentration. So glucose can come out and can enter easily. तो याद रहेगा निमोनिक फॉर दैट कि जहाँ two-way communication होगा glucose transporter 2. Gluconeogenesis occur in liver, two-way communication. Gluconeogenesis occur in kidney, two-way communication. Clear? Now so these are few questions. Glucose transporter 3 are present in neurons and placenta. Glucose transporter 4, this is very frequently asked question. I made mnemonic. Main function of insulin is yes, I will cover all the subjects. Yes, all the 19 subjects before that. Yes, main function of insulin is to decrease blood glucose. Means any reaction which decrease blood glucose is activated by insulin. Mnemonic for this: M
AIN, 4 words. So yes, M for muscle, M for muscle. Muscle may be cardiac or skeletal, may be cardiac or skeletal. So A for adipose tissue. So 1, 2, 3, 4 glucose transporter 4 are present. Yes, glucose transporter 4 are present at cardiac muscle, skeletal muscle and adipose tissue, and they are activated by insulin. So you will remember like this. Yes, cardiac muscle, skeletal muscle and adipose tissue. Yes, glucose transporter 4 are present and they are activated by insulin. Question is asked. Yes, for in prolonged fasting means not taking food for a longer time, in glucose will decrease, insulin will decrease. When insulin will decrease, these glucose transporter 4 will decrease at cardiac, skeletal and adipose tissue. Okay, so this is heart, cardiac muscle, adipose tissue and skeletal muscle. Glucose transporter 4 are present. Glucose transporter 5, name itself tells you 5. F for 5, F for fructose, F for fructose. Yes, glucose transporter 5 is responsible for the transport of fructose, and a mnemonic is that 5 looks like S, seminal vesicle. S, small intestine. So question is asked, glucose transporter 5 is present at seminal vesicle, small intestine and responsible for transport of fructose. Okay, so these are question on glucose transporter. Now galactose metabolism. Yes, galactose metabolism. Before galactose metabolism, yes, you solved this question. Please do answer. Yes, galactosemia is possible due to deficiency of following enzyme except, yes, HGPRT. HGPRT is deficient in Leishman syndrome. Leishman syndrome. Yes, Leishman syndrome is X-linked recessive. Question is asked. Yes, and HGPRT, hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase, Leishman syndrome, X-linked recessive disorder. Other enzymes are used in galactose metabolism. Let me describe. Galactose metabolism. Galactose is converted to galactose 1-phosphate by galactokinase. All kinases are transferase. Remember this point. All kinases are transferase. I have already told you. All kinases require magnesium as cofactor. So galactose is converted to galactose 1-phosphate. Then galactose 1-phosphate react with UDP glucose. React with UDP glucose to form UDP galactose by galactose 1-phosphate uridyl transferase. Then UDP galactose is converted to UDP glucose by UDP galactose 4 epimerase. Yes, 4 word is important. Galactose is epimer of glucose at which carbon? C4. Okay, even if you don't remember so much of things, it's okay. Just remember,
galactokinase. Kinase काना. काना मीन्स वन आइड मैन. क्या कहा मैंने? काना मीन्स वन आइड मैन, मतलब कि एक आंख अफेक्ट होती है. यस मीन्स, और आंखें अफेक्ट होती है. ग्लूकोकाइनेज डिफिशियंसी इज माइनर टाइप ऑफ गैलेक्टोसीमिया, दैट इज ओनली एंड ओनली कैटरैक्ट इज देयर. दिस इज ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट. व्हाट इज दिस? ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट. तो गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोकाइनेज डिफिशियंसी में ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट. क्वेश्चन आता है, ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यस, गैलेक्टिटोल. अदर नेम इज डल्सीटोल. कैसे याद रखोगे? ऑयल, यदि कहीं पे ऑयल डल जाता है, टपक जाता है, तो अपीयरेंस डल हो जाती है. ओके नहीं, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट. लेट मी टेल यू, गर्ल्स में गैलेक्टोज आई रिप्रेजेंट बाय गर्ल. यस, विंटर में हम कहते हैं कि विंटर क्रीम्स है, इसमें तो मॉइस्चर है, स्किन डल हो जाएगी. ओके, तेल है, डल हो जाएगी. ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट डल्सीटोल. गर्ल्स की स्किन डल हो जाएगी यदि वो ऑयल या और मॉइस्चराइज लगाते हैं. तो मेक एनी निमोनिक लाइक दिस. इफ क्लासिकल टाइप ऑफ गैलेक्टोसीमिया क्या होता है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन क्लासिकल टाइप ऑफ गैलेक्टोसीमिया दिस रिएक्शन विल नॉट अकर. दिस galactose 1 phosphate will accumulate. दिस galactose 1 phosphate क्या करेगा? लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा. कैसे नहीं होने देगा वो बात की बात है. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. यस, galactose 1 phosphate will inhibit this glycogenolysis. So fasting hypoglycemia, okay, and hepatomegaly. Remember this point. Hepatomegaly, fasting hypoglycemia, in previous class I told you is present in liver glycogen storage disease. So don't get confused when hepatomegaly and fasting hypoglycemia there. This may occur in galactose metabolism also. And in galactose metabolic defect, classical galactosemia, there is fasting hypoglycemia, hepatomegaly, but these symptoms appear after taking breast milk. चाइल्ड जब भी मिल्क लेगा उस टाइम पे उसे ये सिम्टम्स आएंगे. याद रहेगा? ओके, सो ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट पिक्चर क्वेश्चन MCQ. ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट पिक्चर MCQ. यस, galactokinase minor type only cataract. In classical type hypoglycemia, hepatomegaly, also oil drop cataract. एक होता है सोर्बिटोल पाथवे. In this sorbitol pathway, glucose is converted to sorbitol. Sorbitol accumulate in lens to make snowflake cataract. It occur in diabetes. डायबिटीज़ में क्या होता है? इन डायबिटीज़ ब्लड ग्लूकोज इज़ हाई, सो मोर एंड मोर ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू सोर्बिटोल. सोर्बिटोल एक्यूमुलेट इन लेंस. लेंस में देख लो स्नोफ्लेक कैटरैक्ट हो जाएगा. ये सोर्बिटोल पाथवे नॉर्मली होता कहाँ पे है? दिस सोर्बिटोल पाथवे नॉर्मली अकर इन सेमाइनल वेसिकल. आई जस्ट टोल्ड यू, सेमाइनल वेसिकल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन से होते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5, यस, सेमाइनल वेसिकल में होते हैं. बिकॉज सेमाइनल फ्लूइड इज रिच इन फ्रक्टोज एंड स्पर्म यूटिलाइज फ्रक्टोज. दैट्स वाई ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज बाय सोर्बिटोल पाथवे इन सेमाइनल वेसिकल. ओके, and in diabetes this pathway increased, so accumulate in lens snowflake cataract. Clear?
Disaccharides. If we talk about disaccharides, yes, जब भी disaccharide होगा, whenever disaccharide होगा, 1 unit would be glucose. देख लो, sucrose 1 unit is glucose, 1 unit is glucose, 1 unit is glucose, 1 unit is glucose. You want to find the another unit. सुक्रोज शुक्रवार, फ्राइडे. भाई एक यूनिट तो हमें पता है, 1 यूनिट हमें पता है कि क्या है, ग्लूकोज. दूसरी यूनिट ढूंढनी है हमने. सुक्रोज शुक्रवार, फ्राइडे. लैक्टोज, एक यूनिट तो ग्लूकोज है ही, दूसरी ढूंढनी है गैलेक्टोज. GA लगा दो बस इसमें, गैलेक्टोज. दूसरी यूनिट क्या है, गैलेक्टोज. माल्टोज, माल. Each and every cell utilize glucose for the production of energy. यदि सेल के पास ग्लूकोज माल्टोज आया, यस, उसमें कितने ग्लूकोज हैं, 2. सेल क्या कहेगी, माल आ गया. क्या आ गया, माल. मतलब बोथ यूनिट्स आर ग्लूकोज, बोथ यूनिट्स आर ग्लूकोज. ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू रविंदर. यस, सो ग्लूकोज, both units are glucose. Trehalose, again both units are glucose. Now इसमें तुम्हें याद रखना है, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, all carbohydrates may have reducing property. What I said, carbohydrates have रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. सो जितने भी मोनोसैक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसैक्राइड, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ऑल मोनोसैक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर. ऑल मोनोसैक्राइड्स आर रिड्यूसिंग sugar. It's not only occur in seminal vesicle, at other places, but it is sorbitol pathway is significant in seminal vesicle. Okay, but otherwise it occur at other places also. Okay, all monosaccharides are reducing sugar. सो जितने भी मोनोसैक्राइड्स हैं रिड्यूसिंग शुगर हैं, दे विल गिव बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव. रिड्यूसिंग शुगर गिव बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव. व्हाट इज बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव? निमोनिक है, तुमने यूरिन सैंपल लिया, urine, if you took urine sample is having sugar. We want to measure the concentration of sugar or quantity of sugar in this urine sample. Can we measure? Yes, we can measure approximate sugar concentration in urine sample by Benedict test. You gave me sample and asked me, yes, can you tell me what is the concentration of this sugar in this sample? I said okay, it's very easy. I applied Benedict test, and after doing that we saw the color. I saw the color. If it remains blue, I would say your sample has no sugar. But if green, that is a small amount, traceable amount, 0.5 to 0.1. If yellow, 1 to 1.5. Means I am telling you the quantity range, not exact quantity. That's why Benedict test is called semi-quantitative test. Semi-quantitative test. Why? Because you can't tell the exact quantity, but you can tell the range. Okay? And how to remember? Mnemonic is Vibgyor. VI remove, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. So sequence you can easily remember. Okay. Yes, in fact
Yes, when you touch a topic, I do remember so many things. Yes, this sorbitol pathway, this sorbitol accumulate in lens in diabetes, and you will find that this sorbitol is responsible for the most of the complication of diabetes. Yes, you all know that this aldose reductase convert glucose to sorbitol. In fact, we have now medication for this inhibitor of aldose reductase. If we will inhibit aldose reductase, sorbitol will not be produced and the complication of diabetes will be reduced. Okay, dear. Now, fructose metabolism. I will discuss fructose metabolism. Fructose is a fruit sugar. Question is asked. Very simple question. Fructose is a fruit sugar. Yes, I have taken this diagram. Fruit. Fructose is a keto sugar. You all know question is asked. कीटो का टो काट दिया, तुमने कट किया, कीटो शुगर कट किया फ्रूट. As you cut the fruit, there would be bees. बी देख लो, बी आई. Okay, so fructokinase convert fructose to fructose 1 phosphate, and fructose 1 phosphate is converted to glyceraldehyde and DHAB by aldolase B. This question has been asked. In glycolysis, the enzyme was aldolase or aldolase A. In glycolysis, the enzyme was aldolase or aldolase A, but in fructose metabolism, the enzyme is aldolase B. The enzyme is aldolase B. B मतलब B, फल कटेगा तो B आएगी. ओके, नाउ तो यू विल रिमेंबर कि फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में एल्डोलेज B होता है. यू विल रिमेंबर. ओके, नाउ यू ऑल नो, yes, honey bee make honey. So honey is having fructose. If I ask you fructose and glucose, fructose and glucose, which one is yes, which one is more sweet? Yes, please do reply. Which one is more sweet? Yes, fructose is more sweet. Yes, honey is made up of fructose. We call our girlfriend, boyfriend honey. Hey honey. Yes, कभी हम कहते हैं ग्लू ग्लू? नहीं, हम क्या कहते हैं? हनी कहते हैं. क्यों? हमें पता है हनी इज हैविंग फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज. क्लियर? And you will remember, yes, you will remember that yes, good. Fructose, yes. Fructose is a fruit sugar. Can you tell me that fructose is dextrorotatory or levorotatory? Fructose is dextrorotatory or levorotatory? Yes, please. Okay. Yes. Yes, you can simply remember fal.
Sorry for those who can't understand Hindi. फल है फल, L for levorotatory, फल L for levorotatory. Fructose is fruit sugar, फल levorotatory. It is strong levorotatory. And glucose is strong dextrorotatory. Is dextrorotatory. Okay. Yes, now we come to few questions. This is favorite question of FMGE. Nitric oxide is formed from. Yes, please do reply. Yes. Yes, acarbose. Okay. Acarbose is I do remember that mechanism of acarbose is little bit different. Acarbose is not aldose reductase inhibitor. Okay, Shreya, you ask acarbose. Acarbose is amylase inhibitor. I think it is means used for the inhibition of absorption of glucose from intestine. Okay, because it is not aldose reductase inhibitor. Okay, dear. Arginine, yes, very good. Arginine, mnemonic for this is, I will write a mnemonic. Arginine is basic amino acid. Yes, do reply. Mnemonic is his basics are loose. His for histidine. Basic means basic amino acid. Very good. Basic amino acid. R for arginine. Loose for lysine. Loose for lysine. Okay. Now, out of these three, which is most basic? Please do reply which is most basic. This should be a two-way communication. We can extend our discussion for 5-10 minutes more, but I want your discussion. Okay, two-way. Histidine, arginine, lysine, which is most basic? Arginine is most basic, having plus 3 positive charge. Most basic, maximum positive charge, 2 positive charge, 1 positive charge. Yes, histidine is least basic. Arginine is most basic. Okay, basic word, whenever you will find word basic amino group, you will have positive charge. What I said, wherever you will find amino group that is positive charge, matlab basic. So most basic is arginine, maximum positive charge. How you will remember? I made a mnemonic. R, there are, English में he is मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, आर मतलब मल्टीपल पॉजिटिव चार्ज. इंग्लिश में तुमने पढ़ा है कि यदि एक बंदा होता है तो इज लगाते हैं, कई होते हैं तो आर लगाते हैं. देयर आर सो मैनी पॉजिटिव चार्ज ऑन आर्जिनिन. ही इज, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सबसे कम बेसिक यही है, सबसे ज़्यादा बेसिक ये है. याद रहेगा. तो मोस्ट बेसिक आर्जिनिन. ओके, और मैंने इसको इस तरह से भी याद किया था एक निमोनिक, आर्जिन जीनी, जो चिराग वाला जिन होता है ना, जीनी. तुमने देखी होगी मूवी जिसमें चिराग में घिसते हैं, जिन निकल के आता है. ओके, उसको जीनी भी प्रोनाउंस करते हैं, जीनी. ओके, तो जीनी की कितनी विश देता है? जीनी कितनी विश पूरी करता है? कितनी विश पूरी करता है? 3 विश, 3 पॉजिटिव विश करता है. ठीक है, 3 विशेस देता है तो 3 पॉजिटिव विश. यदि तुम चौथी मांगोगे तो वो कहेगा नो,
NO, nitric oxide, NO. So Gene related to NO. NO is synthesized from arginine. Ginine. Okay. हाँ, जो हुक्म मेरे आका। कितनी विश है? 3 विश। चौथी मांगते ही कहेगा नो। नो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। आर्जिनिन फॉर्म नो, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे ज्यादा बेसिक यही होता है। 3 बेसिक नीड होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ओके, कैसे भी याद कर लो, मेक निमोनिक। ओके, नाउ क्वेश्चन कैसे आएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। पहले तो ये क्वेश्चन याद रख लो। मैनी टाइम्स वी डू फॉरगेट कि एनोड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, anode is positively charged, cathode is negatively charged. So question is asked, if I give you a mixture of amino acid, these 4 amino acid mixture, yes, which amino acid move fastest towards cathode? कैथोड की तरफ यदि उन्होंने कहा there are 4 amino acid, let me see, write like this, 1 2 3 4. Yes, on electrophoresis, glycine, tyrosine, threonine, arginine. Yes, this would be, out of these 4, this would be, please do reply, this would be arginine. Arginine is having maximum positive charge, so it would be near cathode. तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? 2 तरह से। they give diagrammatic question and they will say this is cathode. out of, yes, please tell me which amino acid is this. So you will immediately understand arginine is having maximum positive charge, so this is arginine. Okay. Second question, which move fastest towards cathode? Which move fastest towards cathode? Arginine will move fastest towards cathode. Clear? So this is about reducing and non-reducing sugar. Yes, I just told you one thing that all monosaccharides are reducing sugar, but disaccharide, which is reducing, which is non-reducing, please do reply. Mnemonic. Okay, if you don't remember the mnemonic. No rest, no rest. No matlab non, RE for reducing, S for sucrose, T for trehalose. अब तैयारी कर रहे हो तो रेस्ट तो नहीं करना. इफ यू आर प्रिपेयरिंग यू विल नॉट टेक रेस्ट. सो नो रेस्ट. नो मतलब नॉन, RE फॉर रिड्यूसिंग, S फॉर सुक्रोज, T फॉर trehalose. सो हाउ क्वेश्चन आस्क दैट. क्वेश्चन कैसे आएंगे? दे मेक क्लिनिकल क्वेश्चन ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट that this patient is suffering from a disorder in which sugar is excreted in urine, and when we did the Benedict test was found to be negative. Benedict test was found to be negative. Benedict test is given positive by which sugar? Reducing sugar. Which sugar most likely may be there? Benedict test negative है तो कौन सी शुगर Benedict test negative देगी? सुक्रोज. Yes, very good, Umesh. Trehalose. So they will give Benedict test negative. Fructose will give Benedict test positive. ठीक. अब मुझे बताओ. If a patient is having fructokinase deficiency, this is deficient. This fructokinase is deficient. Fructose will not be metabolized. This extra fructose will be excreted in urine. So Benedict test will be positive or negative? Benedict test will be positive or negative? Benedict test will be positive. And
all the fructose which will accumulate will be excreted in urine. इसीलिए हम कहते हैं, that's why we say fructokinase deficiency lead to essential fructosuria. Essential fructosuria. Question is asked, essential fructosuria, which enzyme is deficient? Yes, fructokinase deficient. In this patient is asymptomatic. Why asymptomatic? All the extra fructose is excreted in urine. Okay, all the fructose is excreted in urine and Benedict test would be positive. Clear? So we have covered few important points about that. Yes, one important point, you will find this concept everywhere correct. What is correct statement? Whenever you find aromatic ring, what I said, this is a mnemonic, you will not find in any book. Yes, this is a mnemonic. Whenever you find there is a compound having aromatic ring, it will absorb a light of particular wavelength. In last class I told you that tryptophan is having this large aromatic ring. So tryptophan absorb light at around 260 to 2 nanometer. Tryptophan absorb light at around 260 to 280 nanometer. Aromatic amino acid are phenylalanine, tyrosine, histidine, tryptophan. Histidine and tryptophan, they absorb light, and most important amino acid which absorb maximum light is tryptophan, 260 to 280 nanometer. If I ask you, yes, if I ask you purine and pyrimidine ring, yes, purine ring and pyrimidine ring, yes, we will discuss in the next session. Yes, purine ring is double ring, aromatic ring. Pyrimidine ring is single ring. Okay, they also absorb light. So question is asked, DNA RNA absorb light due to DNA and RNA absorb light due to purine and pyrimidine base around 260 nanometer, So one question, DNA RNA absorb. Second question, aromatic amino acid absorb. Third question, porphyrin ring. So these mnemonics you will not find. This is my own observation. I am teaching since 2007. Okay, so whatever I am telling you, whenever you apply, you will find correct. Okay, porphyrin ring, you will find that in porphyrin ring there are 4 pyrrole ring. Even if you don't remember, it's okay, just have an idea. Okay, just have an idea. This is porphyrin ring, methylene bridge, CH double bond like this. So this ring is aromatic. This ring is just like aromatic. Porphyrin ring or heme or cytochrome P450, they absorb light. Cytochrome P450 is having porphyrin ring, that's why it absorbs light at around 450 nanometer. That's why it is called cytochrome P450. Porphyrin ring absorb light at around 400 nanometer. Yes, a question is asked, graphical question is asked, that porphyrin ring show sharp bend at 400 nanometer. How much nanometer? 400 nanometer.
यानी कि पोरफायरिन है ये। दिस एब्जॉर्ब लाइट एट अराउंड 400 नैनोमीटर। कैसे याद रखोगे? क्वेश्चन आता है पोरफायरिन रिंग में कितनी पायरोल रिंग होती हैं? हाउ मैनी पायरोल रिंग इन पोरफायरिन रिंग? 1 2 3 4। तो 400 नैनोमीटर। यस, दिस इज कॉल्ड सोरेट बैंड। क्वेश्चन, Soret band is due to absorption of light at which nanometer? Soret band is due to 400 nanometer. Okay, 400 nanometer. Now, so last topic for today, that is hyperlipoproteinemia. I will tell you very simple technique how we can make mnemonic by the color, by touch, by taste, by smell. Everything can be used to make mnemonic. Yes, I usually say that triglyceride, what I said, triglyceride is white butter, घी। तुमने देखा होगा, पेरेंट्स ने भी कहा होगा दानेदार घी बड़ा अच्छा होता है। क्या कहा मैंने? दानेदार घी बड़ा अच्छा होता है। दिस ग्रेन्युलर इज घी इज क्वाइट गुड। सो दिस इज बटर, white butter. Okay, wherever you will find increased triglyceride, you will find that there is color is white. Just like, let me tell you, if a patient is having hypertriglyceridemia, triglyceride are increased in high concentration, you take sample, you took sample. Yes, question आया कि a person is having hyperlipoproteinemia and we took sample and there was milky white appearance. What I said? Milky white appearance. Milky white appearance किसकी होगी? Triglyceride. So he might be having increased triglyceride. What is the color of triglyceride? White. What is the color of blood? Red. What is the tomato color? Soup of tomato. Tomato soup, red color. We add cream, white color. Sometimes the appearance of patient's blood in which triglycerides are increased, we say cream of tomato soup appearance. What I said? Cream of tomato soup appearance. Very good. Chylomicron is having triglyceride. Yes, cream of tomato soup appearance. This is cream of tomato. This is cream of tomato soup appearance. If you keep the sample रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरनाइट, जो लिपिड आ जाएगा, फैट आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड आ जाएगा, वो सुपरफिशियल आ जाएगा ना, तो उसे कहते हैं यस सुपरनेटेंट लेयर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तुमने देखा होगा मक्खन बटर मिल्क पे ऊपर फ्लोट करता है। यस, द बटर मिल्क एंड बटर फ्लोट्स ओवर द बटर मिल्क। एक चुटकुला भी है, एक बार एक नई शादी हुई, उसमें ससुर का नाम मक्खन लाल था। तो सुबह बहू मक्खन निकाल रही थी, तो उसने कहा सासू माँ मक्खन आ गया है, कहाँ उतारूं? उसने कहा बेटा तेरे ससुर का नाम मक्खन लाल है, ऐसे मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता। उसने कहा नेक्स्ट डे बिलोने लगी, बटर आया, उसने कहा माँ ससुर जी मट्टे पे तैर रहे हैं, कहाँ उतारूं? तो जस्ट जोक। ओके, वेरी गुड उमेश एंड श्रेया। So yes, I think we can discuss hyperlipoproteinemia. Don't worry, in the next session I will do that. Yes, for the time being, जहाँ पे भी ट्राइग्लिसराइड और काइलोमाइक्रोन होगा वहाँ पे तुम्हें वाइट कलर दिखेगा। If chylomicron or triglyceride is there, if you do fundoscopy, normally fundoscopy, the hue is रेडिश पिंकिश ह्यू, लेकिन हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया में कैसी ह्यू होगी? वाइटिश। कैसी होगी? वाइटिश ह्यू होगी। ठीक है, यदि ट्राइग्लिसराइड को तुम इंजेक्ट कर दो सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर दो, ये दानेदार, तो ये कौन सा जेंथोमा बन जाएगा? इरप्टिव जेंथोमा। ये सब निमोनिक है। इरप्टिव
जैंथोमा, यानी कि जब भी तुम्हें लगे कि इरप्शन है, इरप्टिव जैंथोमा, यस, इरप्टिव जैंथोमा, यस, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होगा, ओके, यस। तो ये इरप्टिव जैंथोमा हो गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़े होंगे, वाइटिश ह्यू आएगी। नाउ कोलेस्ट्रोल, आई से कोलेस्ट्रोल इज एग योक। कोलेस्ट्रोल क्या है? एग योक। जहाँ पे भी एग योक है वो कोलेस्ट्रोल लगेगा मुझे, मैंने पिक्चर बना ली। यदि मैं इस कोलेस्ट्रोल को यहाँ पे इम्प्लांट कर दूँ, इफ आई इम्प्लांट कोलेस्ट्रोल हेयर, मीन्स इफ ए पेशेंट इज देयर हैविंग हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, you will say he would have this type of xanthoma in the tendo Achilles, इसे कहते हैं टेंडन जैंथोमा। क्या कहते हैं? टेंडन जैंथोमा। सो कोलेस्ट्रोल इंक्रीज, टेंडन जैंथोमा। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेंडन जैंथोमा है, क्या है? मोस्ट कॉमन साइट इज टेंडो Achilles, टेंडो Achilles, मोस्ट कॉमन साइट, क्लियर। और यदि किसी को बोथ ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रोल दोनों बढ़े हो, बोथ आर इंक्रीज्ड, देन इट इज कॉल्ड ट्यूबरो इरप्टिव जैंथोमा। ट्यूबरो, कोलेस्ट्रोल की वजह से ट्यूबरस जैंथोमा और टेंडन जैंथोमा, ट्यूबरस जैंथोमा और टेंडन जैंथोमा, एंड यस ट्यूबरो एंड ट्राइग्लिसराइड की वजह से इरप्टिव जैंथोमास, ट्यूबरो इरप्टिव जैंथोमा। इन ट्यूबरो इरप्टिव जैंथोमा देयर आर आल्सो पामर क्रीज, in this type 3 hyperlipoproteinemia, ये क्या है? type 3 hyperlipoproteinemia, hyperlipoproteinemia, 3 looks like E. type 3 hyperlipoproteinemia, ApoE is defective, and ApoE is defective, so both triglyceride and cholesterol is increased, and there is palmar xanthoma and tuberoeruptive xanthoma. Okay, tuberoeruptive xanthoma. So I can discuss a few more points about this, but before going to main topic, question, other topics, fasting RBC utilize, please do reply. In fasting RBC utilize, what is the answer? I am little bit random because biochemistry is very large subject, so I am trying to cover important topic. Yes, what is fasting? In fasting RBC utilize, please do reply. You all know. फास्टिंग आरबीसी यूटिलाइज ओनली एंड ओनली ग्लूकोज। मैंने बताया था आरबीसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आरबीसी कहाँ पे है? ब्लड में। यस, आरबीसी यूटिलाइज ओनली एंड ओनली ग्लूकोज। यदि तुम्हारे पास खूब सारा खाना है, तुम जा रहे हो और तुम्हारे पास खाना है, तुम किसी से मांगोगे नहीं। ब्लड में ग्लूकोज है, ब्लड में ही आरबीसी है, आरबीसी ग्लूकोज उठाएगी, खा लेगी जब मन करेगा। तो ग्लूकोज, ओके। फास्टिंग, फैड और स्टारवेशन सब में क्या यूटिलाइज करती है? ग्लूकोज, ओके। एंजाइम इनहिबिशन और कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, ओके, जाते जाते। एंजाइम इनहिबिशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सिंपल सा है, निमोनिक बनाएंगे, देखते हैं। ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, and I take black color as inhibitor. It is inhibitor. Enzyme, substrate and inhibitor. Yes, this is competitive inhibitor. Yes, competitive inhibitor.
competition occur two similar persons. Two MBBS doctors are there, they are fighting for MCA exam, they are fighting for PG entrance exam. So competitive inhibition, inhibitor has similarity with the substrate, yes or no? देख लो शेप जैसी एक जैसी सी है, बस कलर अंतर है, कलर थोड़ा डिफरेंट है, ये रेड है और ये क्या है, ब्लैक. This is inhibitor. In this enzyme, this is active site. We found that in competitive inhibition, substrate bind to the active site. Inhibitor also try to bind to the active site because they have competition. They appear in the same exam. दो MBBS डॉक्टर हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक. Yes, competitive inhibition. Now, भाई एक MBBS डॉक्टर है, एक BMS डॉक्टर है, इज देयर एनी कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं है. ओके, now we found that this enzyme, यहाँ पे हम एक लिखेंगे Km is inversely proportional to affinity. Km is inversely proportional to affinity. If affinity increases, Km decreases. रटना है तुम्हें, ये क्वेश्चन आते हैं. हम मान लेते हैं कि ये एक एंजाइम है. Enzyme has particular attraction for substrate, affinity for substrate, care for substrate. अब inhibitor की structure भी same है. Inhibitor also bind to the active site, so affinity for substrate will decrease. Yes or no? भाई सपोज करो पहले सिर्फ एंजाइम था, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता था, अब इनहिबिटर और आ गया, तो few molecules of enzyme will try to bind with inhibitor also, so affinity towards substrate will decrease. Simple language, एक मदर है, एक चाइल्ड है, अच्छी केयर करती है, बहुत ध्यान रखती है, अब दो चाइल्ड हो गए तो केयर वुड बी अफेक्टेड. भाई काला है इसका मतलब प्यार नहीं करेगी क्या? काले को भी तो प्यार करेगी. यस, so it will take care of this black one also, so affinity towards substrate will decrease. Affinity decrease, Km increases. So you will remember like this, and V maximum remain same. V maximum remain same. No change in V maximum. Okay. नॉन कॉम्पिटिटिव. ओके, यदि याद नहीं रहा कोई बात नहीं, आई विल मेक यू रिमेंबर बाय निमोनिक. नॉन कॉम्पिटिटिव. इन नॉन कॉम्पिटिटिव, यस, दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज इनहिबिटर. No structural similarity. Substrate and inhibitor, no structural similarity. भाई कोई सिमिलरिटी है इसमें? ये गोल है और ये ट्रायंगुलर है. Substrate bind to this site, inhibitor bind to this site. इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं. इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड कर गया तो it will not affect the affinity, so no change in affinity, no change in, अभी लिख लो, then I will make mnemonic. No change in affinity, so no change in Km. So how you will remember? No change in Km, non competitive. नॉन कम्पिटिटिव, यस, नो चेंज इन Km. कम्पिटिटिव को तुम Kmpetitive भी लिख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन इज सेम. ओके, नो चेंज इन Km. एक आदमी है, देयर इज ए पर्सन हु इज रनिंग विद ए पर्टिकुलर स्पीड. नाउ यू गिव हिम ए बैग, नाउ यू गिव हिम ए बैग, दिस हैवी बैग ऑन हिज बैक, पिट्ठू बैग दे दिया. अब कहा दौड़, मैक्सिमम वेलोसिटी से दौड़ पाएगा?
नहीं, वी मैक्सिमम डिक्रीज, पिट्ठू बैग के साथ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव नहीं होगी. ओके, सो नो, if you remember, if you don't remember, it's okay. How you can remember this? If you don't remember, just it is opposite to it. Non-comparative, no change in Km, no change in affinity. Pithu bag, V maximum decreases, V maximum opposite remains same, Km increases. Clear? Now you will remember. Okay, a question rarely asked but asked, uncompetitive. Mnemonic is invert the U. Km is decreased, V maximum is decreased. Uncompetitive, both Km and V maximum decreased. Okay, so you will remember like this, uncompetitive, invert the U. Okay, so this is competitive, non-competitive. Yes, question is asked, tuberous xanthoma, yes, और टेंडन जेंथोमा, ये कहाँ पे होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है. मोस्ट कॉमन साइट टेंडो एक्लेस, इरप्टा जेंथोमा, ट्राइग्लिसराइड बढ़े होते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़े होते हैं तो देन देर इज मिल्की अपीयरेंस एंड yes, whenever there is aromatic ring, they absorb a particular wavelength. Cytochrome P450 absorb P450, porphyrin ring absorb at around 400. Soret band, question, maximum absorption by tryptophan at around 280 nanometer. DNA absorb light. Okay, this his basics are loose histidine, least positive charge, least basic. Arginine, most basic. Arginine, Gini is having 3 wishes, plus 3 positive charge. Yes, if you ask the 4th wish, he will say no, and no is synthesized from arginine. Okay, electrophoresis में arginine will move maximum towards cathode. Yes, sorbitol pathway, ये sorbitol pathway normally occur in seminal vesicle, responsible for fructose production. In diabetes, more and more glucose is converted to sorbitol to produce snowflake cataract. Galactosemia, you will remember, in galactokinase, kana only, aankh affected, cataract is affected. In this, hepatomegaly and hypoglycemia would be there. Okay, cataract would be there. Fructose metabolism, essential fructose urea, you will remember that कोई symptom नहीं होते. Reducing sugar urine में होगी. Reducing sugar के लिए Benedict test, Vibgyor, you will याद remember, this is semi quantitative test. Okay, टाइप 1, यस, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1 आरबीसी एंड ब्रेन में होते हैं. यस, टाइप 4, मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज. एम फॉर मसल, कार्डियक स्केलेटन. ए फॉर एडिपोज टिश्यू. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 होते हैं. इंसुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है. इफ इंसुलिन इज डिक्रीज्ड देन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 एट कार्डियक स्केलेटल yes will decrease. Okay, now yes, you will remember liver is the main organ of metabolism. It will utilize in the same sequence. Yes, glucose, fatty acid, अमीनो एसिड. यस, ब्रेन प्रेफर करता है ग्लूकोज. हार्ट, दिल तो पागल है, यानी कि तेरे पास ग्लूकोज है फिर भी यू आर यूटिलाइजिंग फैटी एसिड. आरबीसी यूटिलाइज मेनली एंड मेनली ग्लूकोज, ओनली एंड ओनली ग्लूकोज, क्योंकि आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. ओके, so we have covered few important questions, recently asked question. One more session of biochemistry will be on Monday. Yes, as I have given the schedule of all subjects. Yes, I am full-time faculty of biochemistry and psychiatry. Yes, other than that I have now started exploring other aspects of medical science. So I will, yes, I will do connect, I will remain connected with you, and I assure you this June would be very exam would be very easy to clear. Yes, not because of me, because of your positive thinking, because of your positive power, your will. Yes, even on this holy occasion you are sitting with me, you are spending time with me. That's the positive prognostic factor. I usually say in a psychiatry we always search for prognostic factor, and definitely you will clear this exam
with this positive attitude, we will continue our study as much as possible. Tomorrow also, we will try to utilize as much as time as possible. Okay, best of luck, remain positive. Okay, good night and happy Holi again.